Okay. Hello, Nisar madam. Hello, sir. Join केलं. हा sir. आणि what about the Kishore sir? Yes, sir. I'm here. Good morning. Sir, good morning. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. How are you, sir? Sir, fine. आप कैसे हैं? बस मजे में सर. थैंक यू. आपकी काफी अच्छी एक्टिविटी चालू है इधर उधर. हाँ, चालू रखना पड़ता ना. Nisar madam, can we can start, madam? Okay, sir. Okay. Start, sir. Yes. Okay. A very good morning to all. I, Dr. Ketki Misar, first pay my homage to late Shri Govindraoji Vandari sir, a great visionary leadership and founder president of Amar Seva Mandal. As a member of IQSC Kamala Nehru Mahavidyalaya, it is my proud privilege to welcome patrons of the FDP, Honorable Dr. Srimati Suhasini Vandari Madam, President of Amar Seva Mandal Nagpur, Honorable Advocate Abhijitji Vandari sir, MLC and Secretary Amar Seva Mandal, Honorable Dr. Smita Vandari Madam, Treasurer of Amar Seva Mandal. I heartily welcome today's eminent guest speakers, respected Dr. S.B. Kishore sir, Head, Department of Computer Science, Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur. I also welcome organizers of the FDP, respected Dr. Dilip Badwaik sir, Principal Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur, and respected Dr. W.B. Gurnule sir, Convener of FDP and Head of Chemistry, Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. I extend my warm welcome to all the respected faculty members, academicians, research scholars, students, and all the participants across the nation. Today, we all have gathered on the 6th day of online National 1 Week FDP on ICT Tools for Effective Teaching Learning, organized by IQSC, Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. The world is full of diamonds and gems, and it is indeed my pleasure to introduce you all one of those gems as today's resource person. He is respected Dr. S.B. Kishore sir. Respected Kishore sir is head of Computer Science Department since year 2000 in Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur. He was chairman of Computer Science Board and an academic council member at Gondwana University, Gadchiroli. He is a double PhD holder in professional subjects that includes computer science and management. He is a meritorious student and national computer quiz winner, a 4 times district champion in carom tournaments and 3 times district champion in chess tournament, and many more feathers in his cap. So far, he has been credited with 5 patents, including Australian patents. He has written 73 books, including 17 international publications, and with re-edition, this figure goes to 125 books. Many of his books are included as a textbook and reference books in various courses and universities. He has published many papers in a reputed journal, including Scopus and various national and international conferences, having good citations. He has been a resource person more than 125 times that at many national and international conferences, UGC, HRDC, academic staff colleges, etc. Master Dr. S.B. Kishore has trained more than 15,000 PhD research scholars and faculty members on the topic of ICT, research, citation tools, plagiarism, etc. Since COVID-19
He has uploaded more than 260 videos on teaching aids for faculty, academics, research, and other utility videos on his YouTube channel. More than 2.51 lakh viewers viewed his videos across 40 countries. Most importantly, to honor his dedication and determination for his work, Dr. Kishore has been awarded many awards, including some prestigious ones like the Ideal Teacher Award 2012 and Best Winner Award 2013 from RTM Nagpur University, Nagpur. He is a holder of the Indian Book of Records 2014 for writing the maximum books in computer science and recipient of the Ideal Teacher Award 2016 of Gondwana University, Gadchiroli. Distinguished HOD 2017 of Computer Society of India, Mumbai, and Shiksha Ratna 2019 of Zero Mile, Nagpur. Best Faculty Development for Online Teaching during COVID-19 of IESA from SSM Mandals, Chandrapur. Master Award 2023 IIT Bombay. I am highly delighted to call upon this eminent personality to guide all of us today on the topic Empowering Education, Assembling Teaching Tutorial and Resource. Thank you, Kirti madam, for this brief and detailed introduction. So, as well as I am very much thankful to all the management and my friend Gurunle sir, as well as the principal Badvaik sir. So, with the kind permission of the organizer, I will start my session. It's a kind request to give me a sharing permission. Okay, thank you. So in the today's sessions, we are going to discuss about how to assemble all the teaching resource in your website. It means we are going to discuss how to create your own website that will empower the educations. So before going to start my session, it's a kind request to all of you. To mute yourself, and whenever you have any kind of doubts, you can ask me at that moment only. It is not necessary to ask the question at the end. You can unmute yourself and ask me the questions. Now, it's before going to start my session, we will have one small quiz. Okay, so it's a kind request to all of you to open a slido.com on your web browser. It's a kind request to all of you to open or simply type a slido.com on your web browser and type a code 3802241. It means on your web browser, you need to type simply a slido.com and then type a code over here 3802241. It may be your Google Chrome, it may be Internet Explorer or whatever the browser that you are using, no issue at all. कोई भी browser हो, कोई issue नहीं है. Simply type slido.com, then press enter key, followed by you will get a screen something like this. And here you need to type a code 3802241. So I'm expecting at least 75 participants over here. आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल. Quickly. Good. Let me repeat once again. Simply type a slido.com on your web browser, followed by a type of code 3802241, or simply scan this QR code in order to join this particular quiz. Good. All of you are in a fresh mood to learn something new. And of course, I will assure you that at the end, you will find this session is somewhat
more knowledgeable for you people in order to, and you will be able to create your own website. It is not necessary to have a knowledge of computer in order to create this kind of website. That's what we are going to discuss in the today's session. So it's a kind request all of you to join quickly. So for only 7 participants join. किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. Simply scan this QR code and join. That is the simplest way. Questions are very simple. Please quickly. There are 105 participants are there, so I'm expecting at least 70 to 75. Simply scan this QR code and join this particular session. Eager to know and learn interesting fact about Slido. Of course, we are not going to discuss about the Slido. I'm using the Slido only for the quiz. Yes, 15 participants join. Please, as early as possible. थोड़ा जल्दी प्लीज all of you. Simply scan this QR code and join the session. Last minute. Okay. Last 30 seconds. And we will start our session. Okay, let us start with the session. Now, from now onwards, for each and every question, there will be the time limit. Okay, so within a time limit, you need to answer. So first question, that is, okay, someone is typing. Okay, the first question is, in general, what are the 3 important aspects of the classroom? In general, what are the 3 important aspects of the classroom? Attendance, conducting the classes, analyzing the performance. Attendance, providing only notes and evaluation of a student. Attendance, conducting a session and conducting a test every day. What are the 3 important aspects of the classroom? Okay, so that's the correct. You need to take an attendance, followed by you are going to conduct a class, and finally you are analyzing the performance of that class. That's good. That's good. Second question. Various electronic tools to access the e-resources are mobile, computer, tablet, smartwatch, TV, or all of the above. Various electronic tools to access the electronics or e-resources.
Yes, Mr. Tarun Kumar, if you have any doubts, you can ask. Mr. Tarun Kumar, do you have any doubts? Okay, the answer of this question is, it's all of the above. Through all this, we are able to access e-resources. Good going. Next question. A website can include a video and audio content, instructional material, ebook related link, assessment, frequently asked question, discussion forum, or all of the above. A website can include. What kind of material a website can include or we can have in a website? Okay, some of you are giving on WhatsApp answer rather than joining this. Okay, good. So 92% people are correct, all of the above. We will be able to include all these things in a website. Our normal video, if you are going to create a normal video of 45 minutes or 40 to 50 minutes of a lecture, it will consume approximately how much memory space? If you are recording a video of a classroom of your lecturer, it will consume how much memory space? Okay, 57% people are correct, in between 600 MB to 1 GB. Next question. As of now, Google provide how many GB free space memory on each Gmail account? As of now, Google is providing how much of free space memory on each Gmail account? 46% people are correct. Okay, it's a 15 GB, and in future it is going to provide you 1 TB. So there is a change in the leaderboard. Okay. YouTube provide how user free space of memory. In YouTube, what is the free space memory is available for the user? Whether it is a 10 GB, 15 GB, 20 GB, or it's unlimited. %48% people are correct. It's unlimited. There is no limit that how many memories you can upload, how many videos you can upload on a YouTube channels. Good. Next, one can upload the number of videos in YouTube channel in between 1 to 500 videos, in between 500 and 1 to 1000, or unlimited. How many videos one can upload on a YouTube channel? That's good. Unlimited, 84% people are correct. There is no limit that how many videos you can upload. Again, there is a change in the leaderboard. Next question. One can schedule when to publish a video in which media? WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. One can schedule when to publish a video in which media? WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Yes, Mr. Tarun Kumar, if you have any doubts, you can ask. Okay, 79% people are correct. It's a YouTube only, where you will be able to schedule when to publish your videos, which is not possible in other media. Again, there is a change in the leaderboard. Good. Google Drive's data can be accessed from the device through which we have uploaded the data earlier, or from any device without having any internet, or from any device having a net connection. Which one is the correct? Google Drive data can be accessed from the device through which we have uploaded the data earlier, or from any device without having the net, or having a net, without having a net, or with having a net. 76% people are correct. Okay. From any device without having a net connection, we will be able to access what? A Google Drive data. MOOC stand for. Since it's a FDP, all of you are faculty members.
So MOOC stands for what? Massive Open Online Course, MP Open Online Course, Mostly Open Online Course, or Massive Open Online Credit. %72% people are correct. It's a Massive Open Online Course. And the last questions. How many quadrants are mentioned in the MOOCs? How many quadrants are mentioned in the MOOC? 2, 4, 5, 6. All the things that we are discussed in the quiz, we are going to elaborate all those things during our sessions. And within a 10 to 20 minutes, we will start a practical session. So 62% people are correct. There are basically 4 quadrants in the MOOC. Okay, we will discuss during our sessions. So now, so congratulations to all of you for doing well. So what hardest question is what? As of now, how many of GB free space memory on each Gmail account? Please remember, on each Gmail account. Now this is simply this is not a poll question. Have you ever created a website using Google Site? Have you ever created a website using Google Site? It's a 50-50. Okay. So almost 50-50. That's good. Okay. So let us start with our session. The most important aspect of the classroom, as we have already seen during our quiz. The first one is what? Taking an attendance. As soon as you entered into a classroom, most of the times, I'm saying most of the times, you start with an attendance. Okay. Now, during the COVID period, we have come across a different kinds of attendance mode. It may be you are using a Google form, you have taken the attendance, then some of you might have started with the biometrics in the classroom, or it may be your regular attendance. No issue. You may follow any one of the mechanism. We first start with an what? Attendance. The next part is what? Delivering the contents. The next important aspect is what? Content delivery. Now, the content delivery means what? It means you are conducting your classes and you are delivering the various types of resources with your student, or you are sharing the resources with your student. It may be a note, it may be a books, or it may be journals. You are may asking someone to refer to a particular website, or you are may asking a newspaper cuttings, etc. So using this mode, you are delivering a content to your student. And the last one is what? You are evaluating the student. It means you are checking the performance of the students by means of what? Assignment, conducting the what you can say that the test examination, or conducting the seminar, poster presentation, etc. So these are some of the mechanism through which you are evaluating the performance of your student. Okay. So these are the 3 important aspects of the classroom. Now question arises, what is e-resources for you? What is e-resources, or how you are going to define e-resources? So let us see. And electronic resources or e-resources is defined as a resource which require a device. Okay, in order to access any resources, you require a certain device. It may be computer, mobile, tablet, etc. And electronic product to access the various materials. Okay, in order to access any e-resources, first of all, you need a device through which you are going to access those resources. So what are the various resources? Now, according to the Wikipedia, e-resources means what? The information usually stored in the form of electrical signals, usually on a computer devices. Okay, that is what? Electronic resources. Now, your e-resources material may be in the form of data, information representing a certain number. It may be in the form of textual, it may be an image, it may be in the certain graphical format, it may be a map, it may be a moving images, it may be in the form of music, sounds, videos, and your programming. Okay, so your e-resources material may be in a different forms. Now, what are the advantages of e-resources?
of course, convenient to access your any resources at 24/7 and from any devices. You will be able to download, print, and send the desired document instantly. You will be able to share the resources very instantly with other people, which is not possible in your normal resources. It will remove the space constraint in the libraries. A large volume of qualified and free information is available for you in the form of e-resources. You will be able to link directly to the additional sources using the e-resources, which is not possible in normal cases. You can't give any kind of links to your normal resources. And not only that, every e-resources have what a feature called as searching, through which you will be able to search a desired information. Okay, so these are some of the advantages of e-resources. Now, in order to record a video of a normal classroom of say 40 to 50 minutes, as we have already discussed, it will take almost 600 MB to 1 GB, depending upon the quality of your videos. Okay, a 40 to 50 minute lecture class may consume around 600 MB to 1 GB of your memory. Now, my question to all of you is, what are the various आपने कौन-कौन से mode use किए in order to share your videos with your students? What are the various modes that you have followed in order to share a video with your students? Please write in your chat box. What are the different modes that you have followed in order to share a videos with your students, or you are following right now? What are the mechanism? What are the tools that Google Classroom, okay, Zoom app के through आप share कर रहे हैं, okay. Google Classroom. What are the different media through which you are sharing the videos? I am sharing the video, sharing the materials. WhatsApp, good. Okay. Cisco, all of them are the LMS, okay. Learning management system, Zoom app, okay. Thank you. Okay, so let us see what are the different medias are available for you in order to share your content with your students. I am saying now material, resource material. The first one is, of course, your social media. Second one is using a Google Drive. You will be able to share your e-resources with your student. Third one is your YouTube, and the last one is a personal website through which you are able to share all your information with your students. So these are the four basic or most important media through which you are able to share your e-resources material. Now discuss all of them one by one. When you are talking about the social medias, of course, all of you are aware about these social media apps like WhatsApp, Telegram, Instagram, Signal, Snapchat, Facebook, Messenger, and so on. Okay, using this media, you are able to share your e-resources material. Now assume that you want to share a video with your student using a WhatsApp. Is it okay? Is it okay if you want to share, if you are going to share a video with your students using a WhatsApp app? Is it okay? Kindly, no, okay. Some of you are saying no, some of you are saying okay. Okay. So answer is somewhat mixed. Now the thing here is that, of course, the advantage, it's very easy to share the any kind of media using this particular social media apps. The advantage is very simple. You will be able to share it very instantly. Okay, it's very easy to share. But we have seen that एक वीडियो बनाने के लिए आपको approximately 1 GB लग रही है. We are taking for a moment, we are taking it's a 1 GB just for calculation purpose. So it means अगर आप 15 वीडियोस आप अपने स्टूडेंट के साथ अगर शेयर कर रहे होंगे, so it will consume almost 15 GB of memory. So do you think that that much of memory is available on your what you can say that mobile? Do you think 15 GB of information, free GB is available for you apart from the various apps that you have already downloaded on your mobile? Do you think that that much of memory is available for you? 15 GB of memory? Of course, you may say that it depends upon the mobile to mobile, but I'm talking in general, okay? So it is not.
So it means it will be very much difficult in order to share a 15 videos with your student using any one of these apps. Okay, and you may say that over a period of time out of memory. And the second thing is that the organization of your material is not possible using a social media. Assume that in a particular class, there were some 2 or 3 teachers are there who are engaging their classes and they are sharing their videos with the student group, in the same student group. So it is not possible for the student to organize those videos according to the lecturers or according to the particular subject. That is not possible using these medias. Okay, so organization of the resource is not possible in order to maintain according to the subject or teacher. So that is the basic drawback of what your any one of the social medias. The next one is using Google Drive. In Google Drive, you will be able to store, share, and access your files and folder from any mobile device or tablet or computer. That's good. But again, it's very easy to share. What you are going to share? You are going to share links with your students. Most of the time, we are sharing the links. But again, question arises: how much of memories or how much of information you will be able to share on your Google Drive? How much of memory, how much of information you will be able to save in your Google Drives? Only 15 GB on a single account, on a single Gmail account. It means if you have a 2 Gmail accounts, you will be able to save a 30 GB and so on. Okay. So again, the problem is what? Out of memory. It means अगर आपके 20 वीडियोस अगर आपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रख दिए so you will not be able to save additional videos on your Google Drives. So that is the basic drawback of what your Google Drives. Now the third one is through YouTube. It is a free video sharing website that make it easy to watch online videos, and you can create and upload your own videos to share. Okay, that's good. There is no limit that how many videos you can upload, and again there is no limit that how much of memories you can upload. Okay. So no necessity to worry about the size and the number of videos that can be uploaded. But of course, what is the basic drawback? You can only upload the videos only. It is not possible to share the other e-resources material using YouTube. Other e-resources material. Okay, that is not possible using YouTube to share. And second advantage is what? You can schedule when to publish your videos, which is not possible in any other medias. Disadvantage? Just we have discussed, we can share only the video. That is the only possibilities. Now, may I know what is flipped classroom? What is flipped classroom? This is a new term. What is flipped classroom? Any one of you? Yes, we can also go to the cloud also. Yes, madam, you are true. But Google Drive is nothing but the what? It's a cloud only. Google Drive itself is a cloud only. Okay. So let us see what is flipped classroom. Okay, Mr. Raghavendra Kumar is correct. Making a student. Kindly mute, please, kindly mute. A flipped classroom is a type of blended learning which aims to increase the student engagement and learning. Okay, how? So rather than kindly mute. Mr. Okay. So rather than learning in the classroom, in the flipped classroom, student first of all learn everything at home, and he is asking his doubt in the classroom. It means student read the content at home and dissolve all the doubt during the class time. That is what a flipped classroom. It means he is doing all the homework at home, and whatever the doubt he has, he is in the next class, he is asking all those questions or he is resolving all his doubts to the teacher in the classroom. That is what a flipped classroom concept. So here, question arises: what are the mechanisms through which we'll be able to engage our students? Now, question arises: what are the various mechanisms that are available for us in order to engage the student room? Because in the future, we are moving towards a flipped classroom rather than our natural classroom. We are moving towards what? A flipped classroom, where student will learn each and everything at home. He will study each and every part in the home, and he will come
into a classroom with his doubts. So question arises, what are the mechanism that we are going to follow in order to keep our student in an engaged mode? Okay, so there are various methods are there. Of course, Google Classroom is there, Covid is there, Vizi is there, and website. Through this, we will be able to engage our students. Okay, so now we will going to discuss about the website only here. So let us think about the website. Very easy to share and distribute the different type of e-resources material like PDF, video scan, handwritten notes. Okay, all these resources material can be shared using a website. Okay, so all the drawback that what we have seen earlier can be resolved using the website. A separate pages can be organized according to the subject or teacher. It means organization is now become very easy when we are talking about the website. Okay. Can implement the concept of LMS, CMS, VLE, that is learning management system, or you can say that course management system or virtual learning environment is very much possible using the website. Okay. And it is possible to integrate various types of material like YouTube videos, images, PDF, all the Google apps. When I'm saying Google app, it may be Google Drive, Google Form, Google Doc, various Google apps materials can be integrated into a website, including the instructional material, resources like article, notes, videos, quiz, and then frequently asked question, etc. All these things are very much possible to integrate within a website. And the most important part with the Google site is that it can be customized automatically to a different devices like laptop, tablet, and mobile. We don't need to write any separate coding in order to customize our content for the various devices. Okay, it automatically customize or synchronize its content automatically based on the device that you are following. So how? Let us see within a moment. We are going to start our session. That is practical session. So creating a website using a Google site. One can create their site very easily using the Google site. Need only a basic knowledge of drag and drop. Simply you need a knowledge of drag and drop. It is not necessary to have a knowledge of your computer. It is not necessary that you should be an expert of computer in order to create a website using the Google site. Okay, so you need only knowledge of what? Drag and drop. Okay, like this, drag and drop. And creating the links, how to create the links. You don't need any kind of programming languages or JavaScript or any scripting languages. It is not necessary to have the knowledge of that. If you have, that is the good. It doesn't mean that कि अगर आपके पास knowledge होगा तो it is something it is not going to help you. It will help you much more in that case. Now question arises, you don't need to worry about the domain name कि मुझे domain name क्या देना है. फॉर एग्जाम्पल www.example.com, यहाँ पे डोमेन नेम क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल. तो ये डोमेन नेम क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं. वी विल बी एबल टू, गूगल साइट विल हेल्प यू टू क्रिएट द डोमेन नेम. Similarly, it will give the hosting services automatically without worrying about the space. Okay, but most important part is that you must have a Gmail account. That is a compulsory. If you don't have a Gmail account, you can't create a Google site. Okay, this is a basic requirement in order to create your Google site. Now, last part, as per MHRD, okay, guideline, a structure, MOOC, massive open online schools have a following component. There are 4 components. E-tutorial. Okay, under the e-tutorial, you may have a videos, audio content. Then you may have a e-content, that is instructional material like e-books, and you may have a related links. Then you should have a provision of assessment in the form of Google form or multiple choice question or filling the blanks, etc. and discussion forum. Okay, if any one of these, अगर आपका कोई भी LMS सॉफ्टवेयर ये सब चारों चीजों को अगर इंक्लूड करता है, in that case you will get a what you can say that the marks in your career advancement scheme. Okay, if you are going to create your website and having all these features, that is e-tutorial, e-content, assessment, provision, and discussion forum, you will be able to score 5 points. Okay, so we will discuss all these things during our practical session. So now, if there is any doubts or queries right now, before going to start our practical session.
before going to start our practical session. If you have any doubt, you can ask me. No, sir. Okay, thank you. So now it's time to start the practical session. I will discuss about this part later on. So like earlier, I told you that in order to create your website, it is necessary that you must have what your Gmail account. Okay. Here you will find a 9 dot, which is also referred as Google Apps. देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे 9 डॉट दिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, गूगल ऐप भी बोलते हैं. आप कहीं पे भी देख सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जीमेल अकाउंट ओपन करना है. अगर आपका ब्राउजर भी ओपन होगा तो भी कोई इशू नहीं, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं. तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सर्च अ ड्राइव. ड्राइव कहाँ पे, उसको सर्च कीजिए. ये कहीं पे भी रह सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि यहीं पे हो. जस्ट मोमेंट. इट माइट बी पॉसिबल कि आपके मोबाइल डिवाइस पे यहाँ पे आपको दिखे. सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं. इसको क्या बोलते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स. ओके, दिस फीचर इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप. So it might be possible, it may appear anywhere in your screen. So simply double click over here, that's all. So this is your Google Drive. So in Google Drive, you can upload the files as well as folders. Okay, let me tell you one more thing. In order to create a Google link, it's very simple. How to create the Google link? Simply right click and right click and copy link बोलो तो क्या बोल जाएंगे, आपकी लिंक बन जाएंगी. It will create a link. This is the simplest way to create a link. ओके, लिंक कॉपी हो गई. तो इन दिस वे, मतलब लिंक कॉपी होने के बाद उसको पेस्ट कहाँ करना है वो बाद में देखेंगे. तो सिंपली बताने का ये मतलब ये है कि लिंक कैसे बनाते हैं. नाउ हियर यू विल फाइंड अ न्यू ऑप्शन वेयर यू कैन अपलोड एनी फाइल फ्रॉम योर लोकल डिवाइस टू गूगल ड्राइव. लोकल डिवाइस से गूगल ड्राइव में अपलोड करने का ये सिंपल तरीका है. देखिए मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ आपको फाइल अपलोड का. तो अज्यूम करते हैं कि आपका कोई एक आधा फाइल है. फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर कमला नेहरू की बिल्डिंग, इसको हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं गूगल ड्राइव में. मतलब फ्रॉम लोकल ड्राइव टू गूगल ड्राइव. ओके, इट हैज बीन अपलोडेड. रिसेंट में आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल्स अपलोड हुए हैं. सिमिलरली अगर आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है अपने लोकल डिवाइस से तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट you will be able to work with Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, and finally click on the more. Here you will find what, Google Sites. Okay, let me repeat once again. प्लस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे. Then from the under the more, select Google Site. Okay, click on this. So this is a basic layout of your website. Please remember, this is the basic layout of your website, and so far we have not given any name to our website. It is what, untitled. So I am going to give a name, say okay, and assume this is your personal page or college home page. Okay, now आप इसको undo कर सकते हो, redo कर सकते हो. These are two options. Then the next one is preview. How it is going to be appear, or how the users are going to view your website can be seen by clicking on the preview. So this is, ये आपको मतलब यूजर को इस तरह से दिखने वाला है. तो मोबाइल यूजर को कैसे दिखेगा, देखिए यहीं पे ऑप्शन है. मोबाइल यूजर को कैसे दिखेगा, टैबलेट यूजर को कैसे दिखेगा, वही इंफॉर्मेशन, और लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर को कैसे दिखेगा. These are the three devices available for you. We have not written any single coding, and it is customizing automatically, or it is synchronizing automatically. Okay, so let me close it. Now here
अपार्ट फ्रॉम दिस, फिलहाल ये क्या है, डीएक्टिव है। ये एक्टिव हो जाएगा जब हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करेंगे इसका मतलब क्या है, इट विल बी इन द पब्लिक डोमेन। जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो जाएंगी और जब हम इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहेंगे तो उस समय हमको क्या करना रहेगा, पब्लिश। तो उस समय ये लिंक क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगी। ओके, तो फॉर ए टाइम बिंग इट्स अ डीएक्टिव, नथिंग टू वरी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू collaborate with someone else, you can also select what here, share option. So any one of you kindly share your email with me. Any one of you kindly share your, okay, Mr. Abdul, I will repeat later on. Kindly share any one of your email with me. Okay, so I'm sharing with them. ये जो भी हम बना रहे हैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। Okay, one more, let's take. Okay, enough. 3 लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, सेंड किया हमने। तो देखिए आपके मेल में एक आपको क्या रहेंगी, लिंक आएंगी जहां पे दिखा रहेगा और आप वहां पे क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप तीनों को एक मेल आया होगा। ओके, ऑल ऑफ यू सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे फिर से, और ये 3 डॉट के बारे में भी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे कल्याणी ज्वाइन हो गए हैं। कल्याणी जी आप एक छोटा सा चेंज कर दीजिए, कॉलेज इन्फो की जगह कमला नेहरू लिख लीजिए। ओके सर। So this is what real time experience where we are sharing the informations. और 2 लोग ज्वाइन नहीं हुए, सुप्रिया और कोई मिस्टर मोहम्मद रहमान करके थे। प्लीज ज्वाइन इमीडिएटली। थैंक यू मैडम। वेट, थैंक यू। ओके वेट कीजिए फिलहाल। Now apart from this, here you will find a 3 option, 3 element, insert pages and themes. Insert pages and themes. So we will start with themes first. Okay, this is what a simple theme. This is a simple theme. You can change this theme to a different vision में कैसे दिखेगा वही मैटर, लेवल में कैसे दिखेगा, then impression में कैसे दिखेगा। Okay, you can also change the background colors and etc. Okay, so आप अपने हिसाब से थीम सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नैरो, देन frank and finally capitals. Okay, so these are the 3 font styles available with this particular theme. So according to your requirement you may select what a theme. That is what the first part. सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अपनी थीम आपको जो चाहिए। अगर आपको खुद की बनानी होगी तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते होंगे। नेक्स्ट वन इज पेजेस। ओके, पहले आप हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। ओके, मोबाइल यूजर को कैसे दिख रहा है, टैबलेट एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर। आप प्रीव्यू को क्लोज करें फिर से। ओके, द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ऑप्शन है एलिमेंट है पेजेस। So you can have n number of pages. The first page that appear when you are starting the website is referred as what, home page. So you can create as many as pages. So we are creating here page say syllabus. Okay, और बुक्स से रिलेटेड हम ले लेंगे पहले। ओके, सिलेबस की कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस। देखिए यहाँ पे आ गया, फिर से हम एक पेज ऐड कर रहे हैं, बुक्स। तो आपको जितने पेजेस ऐड करने उतने पेजेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ना, कैसे चेंज करने का, इमेज में जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट, कुछ डिफॉल्ट इमेजेस उन्होंने ऑलरेडी हमको दिए हैं, तो जो भी इमेज आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग दिस वन फॉर माई होम पेज। ओके, फॉर सिलेबस, सिलेबस के लिए भी हम इमेज चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट,
अगर आपको डिफॉल्ट जो थीम कोई पसंद नहीं आए तो आप यहाँ पे यूआरएल से भी ले सकते हैं। अगर आपका गूगल ड्राइव में अगर कुछ ऑलरेडी होंगी तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड कुछ इमेज है, क्या देखते हैं। ओके, कुछ खास दिख नहीं रहा है। ओके, लेट्स टेक दिस वन। ओके, so like that way, you can change the image of or background of your each and every page. Search फिर से books. Okay, so in this way you will be able to change the background of your page, home page. Similarly other pages too. So we have worked with what pages. हमने pages देख लिए, theme देख लिए. Now the last one is what? Insert. These are the various options are available under the insert. They are also called as controls. They are also called as what? Controls. So let's start with a simple one, text box. Okay, double click. तो सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ डॉक्टर एस.बी. किशोर. Then, like any word processing software, it gives the various features like where you can change what a font style, font size, etc. There are so many features are available like bold, italic, underline, etc. Then you can change the color, etc. So these are the various options that are available like any normal word processing software gives you. Then you can also change the background of this, selecting the color. Okay. If you want to create any duplicate, you can also create the duplicate of the same. And if you want to remove, you can remove from here. Okay, these are the three options available for you. Okay, now इसको क्या बोल रहे हैं हम? सेक्शन बोल रहे हैं हम. इस each part को हम बोल रहे हैं यहाँ पे sections. Then the next one is image. Image के साथ कैसे काम करनेगा? Simply click on the image and upload any image. Suppose I am uploading my photo. आप चाहे तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ओके, इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो. आई एम अनडूइंग. नाउ once again take a text box. Now if you want to आपको लगता है कि डॉक्टर एस.बी. किशोर के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने का है, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल. कैसे देने का देखो. आई एम सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम. मैडम ने जो मेरा बायोडाटा पढ़ा था वही है, कुछ नहीं है. ओके, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट. नाउ लेट मी नो इज इट अ गुड वे टू डिस्प्ले द कंटेंट लाइक दिस. आई एम प्रीव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं. ओके, देखिए इट लुक्स वेरी ऑड. मोबाइल यूजर में देख लिए पूरे कंटेंट दिख रहे हैं यहाँ पे. अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने का होगा तो अननेसेसरली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस. इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग हु यू आर, okay, or for any other content, so you are simply consuming what? A lot of space. Similarly for the tablet user it looks like this, and for the mobile and desktop user. Okay, so what is the solution for this? What is the solution for this? Okay, so I am removing all these things. Okay, यहाँ पे सुप्रिया मैडम भी ऐड हो चुकी है. 2 जन हुए, अभी भी और 1 जन बाकी है. So it's my request to Mr. Rahman, join immediately. Mr. Abdul Rahman, I think. Now instead of selecting text box and images, I will always suggest you to select what? Collapsible group. Instead of working with a text box and that, you can always use collapsible group. तो collapsible group में देखिए कैसे काम कर रहा है. ओके, और आपके जो भी कंटेंट थे वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, जब भी हमने जो कॉपी किए थे. ओके, अभी प्रीव्यू करके देख लो एक बार. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? एक्सपांड का ऑप्शन आ रहा है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही क्या होगा, वहां पे पूरे कंटेंट क्या होंगे आपके? एक्सपांड होंगे. अदरवाइज नो इश्यू एट ऑल. ओके, सुप्रिया मैडम ने फोटोज ऐड किए थे. ओके, फिर से एक बार देख लो. देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका पूरा एक्सपांड हो रहा है.
इसका मतलब कंटेंट अगर पढ़ने के होंगे तो पढ़ते बैठो, नहीं करना है सिंपली इसको एक्सपांड निकाल लो. Okay, that is the advantage of what? Collapsible group. It means you can put a large amount of text. Whenever you have a certain large amount of text, always keep it within what? A collapsible group rather than instead of text box. Text box में रखने की जगह उसको क्या करने का, हमेशा collapsible group में रखने का. Okay. Now once again I am adding a picture. और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं मैं. Okay, so it looks much more better. Please don't change. Okay. We will change again color. So next part is that we are going to discuss under syllabus. Books में हम पहले बुक देखेंगे. सपोज अज्यूम करो कि आपको अपने स्टूडेंट को जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसका कवर पेज आपको दिखाना है. जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका कवर पेज दिखाना है बुक का. तो उसके लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे? वन टेक्निक है इमेज. ओके, वी विल स्टार्ट विथ इमेज ओनली. बुक्स, सिलेबस. सिलेबस में आपके दो बुक्स जो भी होंगे, एक टेक्निक हो गई, सेकंड टेक्निक फिर से इमेजेस में जाएंगे, फिर से अपलोड करेंगे एंड देन दिस. इसको आप साइड बाय साइड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, नो इशू. लेकिन अज्यूम करो कि इसके बारे में आपको कुछ लिखना भी है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज कंटेंट ब्लॉक. यहाँ पे ऑप्शन है कंटेंट ब्लॉक. तो आपको कितने बुक दिखाने हैं? दो बुक्स विथ सर्टेन डिस्क्रिप्शन. अगर आपके इसमें 3 बुक होंगे तो 3 बुक ले सकते हैं. सपोज आपको इस तरह से दिखाना होगा तो इस तरह से भी अकॉर्डिंग टू दैट. इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे 4 ही दिखा सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको और ऐड करना हो तो ऐड भी आप कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So simply again do the same thing, upload option. Okay, and add a detail about the book. For example, you can also write other details. किसके लिए काम की ये बुक? So for example, BSc first year. This is useful for BSc first year same one. You can write like this. इसका मतलब अगर हम नॉर्मल जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, इमेज और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन करके तुमको टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारे लेने पड़ेंगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन यूज द कंटेंट ब्लॉक. आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आपके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है. प्लीज रिमेंबर, ये सब हमने डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी. अज्यूम करें कि ऐसे आपने कुछ दिया. नाउ प्रीव्यू करके देख लो एक बार कैसे दिख रहा है ये. ओके, Excuse फॉर me, मोबाइल sir. यूजर देखिए. यस मैडम, एनी क्वेश्चन? Yeah, sir, this content blocks ka advantage, it has both text as well as provision to insert the picture simultaneously. That's Yes. Okay, that is what advantage. Images including the text box. And one more thing, when you are sharing with the people and who are frequently changing our website, then how long it will be authenticated to use that, sir? Which one? When we are sharing with a group of people, so we are given access for them to change, right? Yes, we can change later on. If you want to remove, you can. Okay, right now the 2 people are there, Kalyani madam and Supriya is there. Okay, now I can also remove them. See, देखिए यहाँ पे share with others में फिर से मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और जिनको मैंने दिया था यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एडिटर में जाके रिमूव कर दूंगा उनको. Okay. And that means if I go for a particular class, if many teachers are handling, I can share my website such that they can share the material. Obviously. Okay. Thank you. Okay. You can also give them the option of publish viewer. It means they will be able to only view. Only what, view. Yes. Yeah. Okay. Thank you, sir. So in this way, you will be able to work with what a content block. Now we will discuss about say syllabus. Syllabus page में मुझे कुछ दिखाना है. सुप्रिया मैडम जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, दूंगा जरूर दूंगा आपको. नाउ सिलेबस से रिलेटेड हम क्या लेंगे? सिलेबस के लिए हम लेंगे यहाँ पे यूजुअली बटन्स लेंगे. ओके,
यहाँ पे बटन नाम का एक ऑप्शन है. My basic purpose here is to introduce you all this. Okay, तो बटन. तो बटन में हम कह देंगे यहाँ पे सिलेबस का है नाम, सपोज BSc फर्स्ट ईयर सेम 1 पेपर 1. एक टेक्निक है कि आप पूरा सिलेबस यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में दिखाओ. एक टेक्निक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपलोड इमेज करेंगे. दैट इज द वन वे. लेकिन अगर आप उस तरह से करते हो, बच्चों को अगर डाउनलोड करना है सिलेबस, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. Okay, so in such situation you can use the concept of button where he will be able to download that syllabus also. Okay, now how, let's see. now मुझे यहाँ पे क्या देना है, लिंक देना है. now मुझे यहाँ पे लिंक देना है. तो लिंक के लिए मुझे क्या करना है, देखिए पहले एक बार रिसेंट में जा रहे हैं हम, अपलोड, फाइल अपलोड में सिलेबस, दोनों सिलेबस में ले रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2. रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम, नो इशू, रिप्लेस कर रहे हैं हम. और रिसेंट फाइल्स में आ गए. इसको मैं रीनेम कर लेता हूं थोड़ा, पेपर 1 है ये. राइट क्लिक एंड कॉपी द लिंक, राइट क्लिक एंड कॉपी द लिंक, और इसको जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे. दैट्स ऑल. ओके, नाउ चेक इट, कैसे दिखने वाला है ये. प्रीव्यू कर रहे हैं हम, क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक सेपरेट वेब पे जो वेब अपना लिंक ओपन हो रही है सेपरेटली. और यहाँ पे स्टूडेंट चाहे तो उसको प्रिंट आउट ले सकता है, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकता है. ओके, रादर दैन इसको हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक क्या थी कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, मतलब उसको इमेज फॉर्मेट में करूं, और फिर मैं यहाँ पे रादर देन वर्किंग विद द बटन, मैं वहां पे क्या करूं, इमेज फॉर्म में उसको दिखा दूं. So instead of that, what you can do, you can select the button option where student will be able to download your syllabus as well as they will be able to take a printout. So same concept you can use for any study material, for your any study material. मतलब आप क्या करेंगे, अपना गूगल ड्राइव में आपका स्टडी मटेरियल जो भी है उसको यहाँ पे रख दीजिए और उसकी लिंक बनाइए और फिर अपने वेबसाइट में उसको पेस्ट कर दीजिए. दैट्स ऑल. ओके, दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू कैन फॉलो एंड दैट इज हाउ यू शुड वर्क विथ व्हाट, अ बटन ऑप्शन. लेट्स सी वंस अगेन. बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नाम देना है यहाँ पे BSc 1 सेम 1 पेपर 2. ओके, मुझे लिंक देना है, तो लिंक कैसे देना है, ध्यान दीजिए. आई एम अज्यूमिंग हियर कि आपने ऑलरेडी अपलोड की है ड्राइव में. पेपर 2, right click, copy the link, then in your website paste that link. Okay, you can also keep side by side, no issue at all. And then finally again preview. Okay, and here you have the option of what, downloading this page, as well as you will be able to take the printout of that. That is the basic advantage when you are working with the buttons options. Okay, so let's move to the next part. Now we are going to take one more page. Now here I would like to share my handwritten notes. I am not an expert of computer. Okay, so I would like to share the materials with the students. Study material. So this is a new page. Here, what I am going to use, the same concept, image, upload, study material pages. देखिए ये आपका हैंड रिटन नोट्स है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी एक्सपर्ट. लेट्स प्रीव्यू इट. Okay, written in Hindi as well as in English. This is what your scan image. It means it is nothing but the e-image. Similarly, language is not important over here. Same thing with Marathi. Properly zooming कर सकते. And finally again same preview. Okay,
Not only that, it may be assumed that कब काम में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ देयर वर सो मेनी इमेजेस, तो आप क्या कर सकते हैं, बुक का जो भी मटेरियल है उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो. Okay, so you can follow this such kind of techniques. You can improve such kind of techniques. You will be able to include what various resources material in your website. These are nothing but your e-resources. Please remember, whatever the thing that we are discussing, all of them are what? They are nothing but your e-resources, different e-resources. यहाँ पे देखिए ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया. यहाँ पे बुक के बाद मुझे मटेरियल चाहिए, तो वो कैसे करने का, यहाँ पे ऑर्डर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, और आपको लगता होगा कि बुक्स और मटेरियल पूरे सिलेबस के अंदर में डालना है, या फिर सिलेबस और बुक को मटेरियल के अंदर में डालने का होगा, मतलब सब मेनूज बनाने का होगा. तो कैसे करने का, सिंपली ड्रैग, मटेरियल के ऊपर छोड़ दो, सिमिलरली बुक को ले लो और मटेरियल के ऊपर छोड़ दो. तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट, अ सब मेनूज. क्लियर. फिर से हम यहाँ पे नॉर्मल रख रहे हैं उसको. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे सपोज आप मटेरियल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इसको हाइड भी करके रख सकते हैं. मटेरियल क्या कर रहे हैं, आपने हाइड किए, और फिर जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमको दिखेगा नहीं. सॉरी, हमने किसको हाइड किया, जस्ट अ मोमेंट. ओ, यहाँ पे हेडिंग हमने मटेरियल लिख दिए. लेट्स चेक वंस अगेन. मेनू में देखिए हमको कहीं कुछ नहीं दिख रहा, मटेरियल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हाइड भी करके रख सकते हैं. मतलब उस पेज के ऊपर आप काम कर रहे होंगे तो स्टूडेंट के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड करके रख सकते हैं, और बाद में फिर से अगर आपको लगा शो करना है तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं. The next important part that we are going to discuss here is about सोशल लिंक्स. ओके, इसके बाद ये बटन वटन भी है, मैं बता देता हूँ क्या है बटन वटन ऑप्शन. सिलेबस में हमने देखे यहाँ पे, सपोज बुक्स में, सपोज मुझे लगा कि इसके बीच में कुछ पार्टीशन देने का होगा, तो पार्टीशन भी हम दे सकते हैं. इन दोनों के बीच में पार्टीशन देने का होगा तो कैसे देंगे हम, यूजिंग बटन ऑप्शन, अपना डिवाइडर. इस तरह से हम डिवाइडर दे सकते हैं. नथिंग मोर इंपॉर्टेंट अबाउट दैट. सिमिलरली यू कैन यूज व्हाट, अ स्पेसर कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं दो दो एलिमेंट के बीच में. ओके, दैट इज वेरी मच पॉसिबल बिटवीन व्हाट, अ स्पेसर. Now we are going to create one more page, social links. Okay, and under that social link के अंदर में social link पे ऊपर क्लिक करो, और लिंक कौन सा देना है आपको, पहला सपोज आपको चाहिए जीमेल का, तो हम कर रहे हैं सोशल इमेजेस. आपका जो भी मेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दो. Then these are nothing but the logos. Please remember, these are nothing but your logos. ओके, फेसबुक का अकाउंट जो भी होगा आपका लिंक, कॉपी एंड पेस्ट. सिमिलरली अपलोड यूट्यूब. तो यू कैन ऐड एज मेनी एज, जितने भी आपके सोशल मीडिया पे एप्स होंगे उन सबका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हो. देखिए यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करते जाओ और जितने आपको चाहिए उतने ऐड करते जाओ. ओके, जितने भी चाहिए आपको इस तरह से आप दे सकते हो. सो इंसर्ट. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं हम. You will be able to redirect to a different social media apps. It is taking a time. Yes, let me. फेसबुक पे हम क्लिक कर रहे हैं.
so it will redirect to the Facebook page. Similarly, YouTube पे करेंगे तो YouTube पे चले जाएगा. So you'll be able to put a different types of what social media app from your website. It seems that someone has already published a website. One of you, Desai madam और सुप्रिया मैडम, दो में से किसी ने तो भी वेबसाइट अपलोड किया, कोई इशू नहीं. Next one, we are going to discuss about how to keep all our video material at one page, in a one page. So for that purpose, I am going to add one more page, say video. तो एक टेक्निक क्या है, देखिए, इंसर्ट यूट्यूब वीडियोस. ओके, अगर आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल होगा तो आप सिंपली क्लिक करेंगे अपलोडेड पे, अगर आपका ऑलरेडी होगा तो. ओके, तो लेट अस सी. So this is the one way. Okay, let's preview it. ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जितने भी वीडियोस है, इस तरह से आपकी जितने भी वीडियोस है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो. बट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, मैं नो, इज इट गुड कि इस तरह से हम जितने भी वीडियोस है वो यहाँ पे हम रखें? इज इट अ गुड साइन? कि जितने भी हमारे वीडियोस है वो हम इस तरह से यहाँ पे अपलोड करके रखें? इज इट अ गुड वे? नो. यस. ओके, एनी अदर आंसर? देन व्हाट इज अल्टरनेटिव डू यू थिंक? लिंक्स. ओके, गुड. तो एक टेक्निक है कि बटन के थ्रू. नाउ ये टेक्निक कब काम में आती है? देखिए, इंसर्ट में हमने यहाँ पे ये जो YouTube है वो तो हमारी YouTube वाले ही वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन हमारा अजूम करते कि हमारे YouTube में कोई वीडियो ही नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसको अगर मुझे शेयर करना है स्टूडेंट के साथ तो वो कैसे करेंगे? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. आपका यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है और आपको अपने स्टूडेंट के साथ क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो फॉर दैट पर्पज वी हैव ए ऑप्शन कॉल्ड एज ड्राइव. ओके, ड्राइव में जाएंगे हम. और आपकी जो भी वीडियो है वहां पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. इट्स टेकिंग अ टाइम. ड्राइव के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ विद इन अ मोमेंट. लेट इट कम फर्स्ट. Okay, it is taking a time, so in the meantime we will do one more thing. Okay, Supriya madam, do one thing. Now it's time for you. एक पेज ऐड कीजिए मैडम, कॉन्टैक्ट अस. Okay, let me close this website and let me start once again. कोई इशू नहीं. Let me close this. फिर से मैं इसको ओपन करूंगा. वीडियोस. ओके, सुप्रिया मैडम तब तक आप एक पेज ऐड कर लीजिए कॉन्टैक्ट अस का. सो इन द मेन टाइम
तो ड्राइव की जगह मैं और एक मेथड बता देता हूँ आपको। अज्यूम कर रहे हैं कि हम यूट्यूब पे ही है, लेकिन हमारी खुद का कोई चैनल नहीं है, हमारा खुद का कोई चैनल नहीं है। अगर हमारा खुद का रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपलोडेड पे जाएंगे। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीडियो सर्च भी कर सकते हैं। अज्यूम दैट you are teaching a C language, so I would like to know about loops in C. ओके, तो ये क्या है, ऑलरेडी किसी और के वीडियोस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। आपका खुद का ही रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वीडियो किसी और के भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोडेड कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज यूजिंग ड्राइव। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इट्स टेकिंग अ टाइम। ओके, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसेंट वन जो मैंने ऑलरेडी रिसेंटली यूज किया था, दिस वन, ये मेरा डाउनलोडेड है, मेरा मतलब मेरे पीसी में ऑलरेडी है, गूगल ड्राइव में है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, दीज आर दी थ्री मैकेनिज्म। वन इज योर ओन वीडियोस, नो इशू। You can also search of someone else, or you can also share the videos that is already in your Google Drives. So these are the three mechanisms through which you will be able to share what videos with your students. All this mechanism is for what? Sharing the e-resources with your students. Next part. Again, we are going to insert the page. Now this time we are inserting the pages, say Google से related कोई भी product का कंटेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी विल सी गूगल डॉक। व्हाट इज गूगल डॉक? एनी वन ऑफ यू? Can we create such kind of website using PHP and Angular JSP? Yes, of course we can. So what is Google Doc? Like MS Word is what? It's a product of Microsoft. Similarly, Google Doc then product of Google. Okay, so you will be able to, अगर आपका कोई भी वर्ड फाइल अगर आपने उसको गूगल ड्राइव में अपलोड किया होगा, और उसको अगर आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली गूगल डॉक में ओपन हो जाएगा। ओके, तो अज्यूम लेट्स सी, वी विल सी प्रैक्टिकली। लेट्स टेक, अज्यूम दैट दिस इज एक फाइल है आपकी, ये क्या में है हमारी, पीडीएफ है, सॉरी, इधर पीडीएफ फाइल। डेस्कटॉप में चलो हम एक लिख लेते, फाइल बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल वर्ड। हेलो फ्रेंड्स, ओके, इतना ही हमने लिखा है, इसको सेव कर रहे हैं हम, सेव कर रहे हैं गूगल साइट्स में ही, हेलो के नाम से ही। ओके, नाउ यहाँ पे हम करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, फाइल अपलोड, हेलो नाम से फाइल बनाई थी हमने, तो ये फाइल अपलोड हो गई है। और जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अ गूगल डॉक प्रोडक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टूड। बाद में फिर से अगर आपको इसको गूगल डॉक फाइल को फिर से अगर आपको कन्वर्ट करना है एमएस वर्ड में, तो इट इज अगेन वेरी इजी। क्या करना है आपको, फाइल में जाएंगे, डाउनलोड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट व्हाट योर गूगल डॉक प्रोडक्ट इनटू एनी ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। इफ इट इज डॉक होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, स्लाइड्स होंगी तो हम उसको पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे, एंड सो ऑन। सो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। नाउ हम जा रहे हैं फिर से हमारे वेबसाइट में, और यहाँ पे देखिए रिसेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे गूगल डॉक प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो, and your students will be able, it means you will be able to share your Google files with your students. Similarly you will be able to share what
sheets. Google Sheet is nothing but your Excel files. ओके, एक्सेल फाइल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, गूगल शीट. एंड फाइनली स्लाइड्स. अज्यूम करते हैं कि आपने कोई पीपीटी बनाई है, वो भी अगर आपको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं. द सेम टेक्निक. हम वहाँ पे उसको पावर पॉइंट बोलते थे और यहाँ पे इसको स्लाइड बोलते हैं हम गूगल में. सेम टेक्निक है. आप पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बना लो, उसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर लो एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. व्हेनेवर यू विल ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल, it will be automatically converted into a slides. Okay, so we have seen 3 products. Let's preview it. आप इसको पॉप आउट भी कर सकते हैं, मतलब न्यू लिंक में ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको. And similarly, you will be able to share your content with your students. So in this way, you will be able to work with almost all. Now, finally, we will see one more gallery, photo gallery. How you can create a photo gallery. Insert. Insert में आप लेंगे image carousel. Kindly mute yourself, please. Mr. Manjit. Okay. Now photo gallery, for that purpose you can select image carousel. Here it is necessary that you must have at least minimum 2 images. So आपके जो भी फोटोज आपने Here what you can do, आपके इसमें जितने भी इमेजेस होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ फोटो गैलरी. इंसर्ट. Okay, it will take a fraction of time before loading. Let's try. Preview में चेक कर लेते हैं. It is taking a time to load. Okay, फिर से एक बार preview. Okay. So in this way, you will be able to create what? You will be able to create a photo gallery. जो भी आपके डिपार्टमेंट में प्रोग्राम्स हुए होंगे वो सब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं. So you can create a photo gallery very well using the Google sites. So we have seen almost all. Now, if you have any doubts here, you can ask me before moving further, because now we are going to see the various settings. यहाँ पे 2-4 settings है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. Excuse me, sir. Yes, please. All these things with the limitation of 15 GB only, sir. It is 15 GB is of what your Google Drive. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, simply link share कर रहे हैं, madam. Yeah, and all this insertion of these photos and also will take some memory. No? Yeah, so that's why I'm saying. If you are using full-fledged website, so how much retention we can? No. See, what हम Google Drive को वीडियो कोई अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिंक दे रहे हैं. We are giving the links of all those things. So link is not going to take a much more space. Okay. Link is not going to take any spaces. Okay. तुम्हारे पैरों से फोन के नीचे पड़ी है, नई बुक बाकी इसलिए मंगाई कि दिन भर बैठ के पढ़ो, उसको तुम छोड़ के नॉनसेंस कर रही हो. ये मेरे को हेलो. आयुषी अपने आप से करो, खेलो. Participants are requested to please mute themselves. Yes, madam. Any more questions? Regarding these photos, how much space will it occupy? It is not going to occupy any space because we are giving simply sharing we are creating the links of all. Okay. इसका मतलब फिजिकली वो वहीं पे है. Gallery of photos. हाँ, मतलब गूगल ड्राइव की हम लिंक शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब की लिंक शेयर कर रहे हैं, हम सब वी आर सिंपली शेयरिंग द लिंक. सिमिलरली जब हम सोशल लिंक बनाए वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, लिंक दे रहे हैं. So links is not. She is talking about photos, sir. Yes, She for is these photos talking also. about photos. Yes. Here photos also. Photos के लिए भी कोई लिंक हम यहाँ पे लिंक ही ले रहे हैं. ये हमारे गूगल ड्राइव की लिंक्स है, लिंक के साथ वो यहाँ पे अटैच हो रही है. तो यहाँ पे फिजिकली नहीं हो रहा है मैडम ये.
अब अगर Okay, वहां से अगर आप डिलीट कर देंगे ना, अगर आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ से अपने आप ही डिलीट हो जाएगा. thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके. नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम, एक यहाँ पे पहले एक गूगल ड्राइव का भी देखते हैं हम. इंसर्ट पेज, ड्राइव, इंसर्ट ड्राइव. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई फोल्डर अगर आपने ऑलरेडी होगा जहां पे अपने पूरे कंटेंट बच्चों के साथ शेयर किए, जिसमें आपका यूट्यूब वीडियोस भी हो सकते हैं, अपना सॉरी वीडियोस हो सकते हैं, आपके स्टडी मटेरियल हो सकते हैं, जो भी टाइप के मटेरियल होंगे जो आपने ऑलरेडी अपने गूगल ड्राइव में अपलोड किए होंगे और एक फोल्डर के अंदर आपने रखे होंगे, तो वो सब के सब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं. मतलब उस फोल्डर के अंदर के जितने भी फाइल्स होंगे वो सब स्टूडेंट क्या कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा. एक मिनट. इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट फोल्डर. ओके, इंसर्ट फोल्डर को कर दो तो अपने आप उसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सब भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर पाएंगे. क्लियर मैडम? वंस अगेन लेट्स सी. ड्राइव में जाइए, जो भी आपका फोल्डर होगा जो आपको बच्चों के साथ स्टूडेंट सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कीजिए. तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सब स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. rather than sharing individual files rather than sharing individual files with the student, you will be able to share your entire folder with your student using the concept of what Google Drive. Let's see preview. Assignment 2. तो आप अपने स्टूडेंट के साथ असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं. सिमिलरली एनी अदर फाइल्स, तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सब आप शेयर कर सकते हो यूजिंग दिस मैकेनिज्म. जबकि हम बटन में जो भी देख रहे थे वहां पे क्या रहती है, एट ए टाइम ओनली वन फाइल इज एसोसिएटेड. But using Google Drive, you can upload as many as files that you would like to share with your students. That is the advantage with what your Google Drives. Now, finally, यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं फिर से एक बार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी पब्लिश साइट लिंक. ये ऑलरेडी हो चुका है. ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल वंस अगेन क्रिएट न्यू वन विद इन अ मोमेंट, क्योंकि वहाँ पे एक दो ऑप्शन जो थे वो मुझे बताना है आपको. गूगल साइट, यू कैन क्रिएट एज मेनी एज साइट्स दैट यू वांट. सपोज ये मेरी वेबसाइट है. देखिए ये फिलहाल ये क्या है, इनएक्टिव है. जैसे ही मैं पब्लिश पे जाऊंगा, अज्यूम करेंगे कि हमारी पूरी वेबसाइट तैयार है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में पब्लिश पे क्लिक करूंगा. देखिए पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये है मेरा डोमेन नेम. दिस इज माय डोमेन नेम. यू कैन गिव एज मेनी, जो भी नेम आपको देने का होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे SBK दिया, तो क्या बोल रहा है, इट इज अ ग्रेट एड्रेस बट इज ऑलरेडी टेकन बाय समवन एल्स. ओके, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. SBK 30, yes, it is available. कोई प्रॉब्लम नहीं है. It means my website name will have what, SBK 30. Then second one, the most important thing here is what, this ये option, request public search engine to not display my site. Okay, you might have heard the concept of internet and intranet. Okay, intranet means what, which is not सपोज आप ऐसी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो खाली आपके डिपार्टमेंट के लोग ही इस्तेमाल करें, बाकी कोई नहीं, पब्लिक डोमेन में ना रहे. जब आपको लगता होगा कि आपकी वेबसाइट पब्लिक डोमेन में ना रहे, तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे. इन दैट केस इट विल बिकम व्हाट, इंट्रानेट. लेकिन अगर आपको लगता होगा कि आपकी वेबसाइट सभी लोग उसको एक्सेस कर सके, तब आप क्या करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे. ओके, और सिंपली क्लिक करेंगे पब्लिश. जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये जो लिंक इनएक्टिव थी वो एक्टिव हो जाएगी. ये जो लिंक इनएक्टिव थी वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. देखो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लिंक एक्टिव हो गई. अब इस लिंक को मैं क्या करूंगा, मेरे स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा. कॉपी द लिंक, दिस इज माई लिंक. Okay, copy this link and share with your student. For example, right now I am sharing in your chat box because someone has already shared our publish किया किसी ने. Now
ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नॉट दैट ओनली, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारी शेयर हो गई है। मैं इसको भी शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं जो भी माइनर चेंजेस करूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, पब्लिश करना है। जब भी हम कोई माइनर चेंजेस करते हैं यू नीड टू पब्लिश। तो मैं फिर से यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये क्या मुझे बताता है, देखिए फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुआ था और उसके बाद हमने क्या क्या चेंजेस किए वो सब मुझे यहाँ पे बता रहा है। लेफ्ट साइड में क्या क्या चेंजेस किए हमने वो सब बता रहा है यहाँ पे। ओके, इन सबको पब्लिश करना है क्या, यस पब्लिश करो। अब ये लिंक मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉपी द लिंक, चैट बॉक्स में। ओके, ये ड्राइव पेज के साथ किया था मैंने, इसलिए ये ड्राइव पेज दिख रहा है। अगर मैं होम पे रहता था तो होम पेज का आता था यहाँ पे। लास्ट वाला जो आ रहा है, जो पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट है विद इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, वो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी सम फ्यू मोर। यहाँ पे शेयर विद अदर्स हमने किए थे, नो डाउट। ओके, 3 जन है, कल्याणी मैडम, सुप्रिया जी भी है उसमें। सुप्रिया मैडम, नाउ यू कैन डू वन थिंग। आप यहाँ पे ये जो है ना वीडियो और होम, इनको आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब पहले होम को लाएंगे, होम को एट द बिगिनिंग में लाएंगे। आप कैसे करते हैं देखिए पेजेस पे। सुप्रिया मैडम, आर यू देयर? ओके, नो इश्यू। देखिए क्या करना है, ये होम को ड्रैग करना है और यहाँ पे जाके ड्रॉप। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग्स के अंदर। देखते हैं हम सेटिंग्स के बारे में देखते हैं। सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट हमारा मेनू कहाँ पे आ रहा है, टॉप में आ रहा है। अगर हमको लगता होगा टॉप में नहीं चाहिए, हमको साइड में चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं। साइड पे लीजिए और चेक कीजिए कैसे आ रहा है ये। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं हम, ये पूरे साइड में आ रहे हैं। ओके, यही मोबाइल यूजर को कैसे दिखेगा। यहाँ पे 3 एरोज आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेगा और जो भी उसको पेज ओपन करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेगा। ओके, सेम फॉर टैबलेट यूजर एंड फाइनली फॉर लैपटॉप यूजर। तो ये एक सेटिंग ऑप्शन दिया उसमें। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है सेटिंग्स में, वो इंपॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट बैनर। ओके, अनाउंसमेंट बैनर आप दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैसेज दे रहा हूं मैं, क्लिक टू रजिस्टर्ड। अज्यूम करें कि हमारे पास कोई एक फॉर्म है, रजिस्टर्ड फॉर्म, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिंक में दे देंगे। बटन का लेबल सेम, क्लिक टू रजिस्टर। और हम अज्यूम करें कि आपके पास कोई लिंक है एक आदि। चलो देखते हैं कोई लिंक है क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मेरे पास। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। ये जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये आपको हर एक पेज पे दिखाना है क्या, हर एक पेज पे दिखाना है कि खाली होम पेज पे दिखाना है? तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ दिख रहा है, ऑल पेजेस में। अगर आपको होम पे करना है तो होम पे भी कर सकते हैं। फिलहाल होम पे ऑल पेजेस देखते हैं कैसे दिखता है। देखिए कोई भी पेज पे जाओ आप, यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक टू रजिस्टर। रिव्यू करके देख लो। ओके, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म जो भी होगा वो ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, जो भी आपको देने का होगा, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और वही ऑप्शन अगर हम इस तरह से देते हैं, only for home page, so it will be appear only on the first page and not all other pages, and not on other pages। प्रीव्यू फिर से देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप होम पे क्लिक करेंगे तब आपको ये दिखेगा। ओके, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस वहां पे सेटिंग दी है। देन अदर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है यहाँ पे, ब्रांड इमेजेस।
आप यहाँ पे अपना लोगो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपलोड कर रहा हूँ कॉलेज का, कमला नेहरू कॉलेज का एक लोगो है। तो देखिए यहाँ पे लोगो आ गया। तो इस तरह से एक लोगो की सेटिंग हम यहाँ से दे सकते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में इस तरह के कुछ ऑप्शन है। नाउ हमने अभी जो भी चेंजेस किए, प्लीज रिमेंबर दे आर नॉट इन पब्लिक डोमेन। जो भी हमने चेंजेस किए वो सब पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मुझे फिर से एक बार पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश, यानी हमने लास्ट टाइम जो चेंजेस किए थे उसके बाद ये सब हमने नई चीजें ऐड की है। ओके, तो ये सब भी हमको अपडेट करना है क्या? यस। So in this way, you will be able to create what? Your videos. Now, any more doubts? Any more doubts? No more doubts? Now, यहाँ पे एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इमेज अपलोड। थोड़ा एक आप डायनामिक व्यू भी दे सकते हैं। डायनामिक व्यू भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। Rather than showing a static page, you can show what? A graphical image page. जिसका एक्सटेंशन क्या रहना चाहिए? इमेज का GIF। वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। So if you have any more doubts, you can ask me, please. Sir, what is the use of embed? Embed, yes, thank you. Embed are useful for those people who have a basic knowledge about what? Say a little bit about HTML coding. Okay, so they can write their coding over here. Okay, let me tell you embed ka. Just a moment, madam. Okay, let's see. कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपकी HTML कोडिंग आपको मालूम है, HTML। टाइटल, you can write your coding over here, HTML coding. Those who have a knowledge about the HTML, they can write the coding over here. Okay. तो देखिए आपको इस तरह से कोडिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आपका जो भी HTML की कोडिंग हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एम्बेडेड कर सकते हैं। दोज हु हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट द व्हाट यू कैन से दैट द HTML knowledge, they can write their own coding over here rather than ये क्या है? सब predefined elements है। All of them are what? A predefined element. If you want to create your own something else, in that case you need to write a coding, and that can be possible within what? Embed. Clear, madam? Yes, sir. Thank you. Thank you. Any more? Sir, can we provide the zooming effect to images? Zooming effect to images, GIF picture. What in this Google Slides? नहीं मैडम, खाली आप ग्राफिकल इमेज जो पिक्चर है ना, GIF पिक्चर, उसी को आप ला सकते हैं। क्योंकि गूगल साइट के अंदर ऐसा कोई कोडिंग नहीं दी है, ऐसा कोई मतलब एलिमेंट नहीं दिया जिसके थ्रू आप उसको ये कर सकते करके। ओके Okay. नाउ टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो लिंक। हम क्या कर सकते हैं? वीडियो बिना अपलोड किए आप एक्सेल फाइल में आप क्या करेंगे? आपके जितने भी वीडियोज है
वो रखे और उसके साथ जो भी आपका लिंक है वो यहाँ पे डाल के रख लो, मतलब पेस्ट करके रख लो। लास्ट में हम क्या करेंगे, इस फाइल को अपलोड करके रखेंगे। देखिए कैसे करें हम। Assume that it is created in Excel. Okay, it is created in Excel. हम पेज बनाएंगे वीडियो लिंक्स। नाउ गूगल ड्राइव में जा रहे हैं, हम अपलोड करेंगे फाइल को। अपलोड स्टडी मटेरियल वीडियो लिंक्स फाइल्स, रिसेंट फाइल्स, रिसेंट फाइल में जाके वीडियो लिंक्स। नाउ देखिए हम हमारे गूगल ड्राइव में आ रहे हैं और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम शीट। तो देखिए यहाँ पे वीडियो लिंक्स आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर दो। रिव्यू इट, जो भी होगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे लिंक दे रहे हैं rather than uploading the videos. ओके, तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके वीडियोस है वो सब यहाँ पे आप मतलब टॉपिक का नाम दे दो, उसके लिंक जो भी वो यहाँ पे दे दो और यही शेयर करो। नॉट अ सिंगल मेमोरी स्पेस विल बी यूटिलाइज्ड। Okay, so that is the advantage when you are working with what? Your website. It means you will be able to share your videos, you will be able to share the different types of resource material with your students, you will be able to share the book cover page, syllabus, etc. all those things, and you will be also able to create your own separate pages. मतलब हर कोई अपने अपने सेपरेट पेजेस बना सकता है, टीचर या फिर आप डिपार्टमेंट वाइज बनाना होगा तो डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं आप। ऐसे जितने भी करना है वो सब पॉसिबल यहाँ पे। एंड नॉट ओनली दैट, you can create a number of websites. You can also create for website for your college, or you can also create separate website for your department, or you can also create your own personal website in this using this method. So that is what all from my side. Over to organizer. Thank you very much, sir, for the excellent brainstorming and insightful session with all of us. Now I request participants to have a, if anybody is having any query, you can ask, sir. You can unmute yourself and you can ask, sir. I think, sir, all the queries have been solved during the session only because the session was very interactive. Thank you, madam. So now I would like to now it's time for oral feedback. Feedbacks are the way to improve ourselves. So I request participants to come forward for giving oral feedback about this national FDP. Anyone? Any participant, if you wish to give oral feedback, you can give. Anybody? Good afternoon, ma'am. Yeah. This is Dr. Subhadra from Chaitanya Bharati Institute of Technology, Hyderabad, Telangana. Okay. I find first of all ICT tools में क्या है ताकि इतना 5 days का actually 6 days, but I find it very interesting and especially this particular session by sir. I'm very much thankful to sir for exploring all these things. Time ही पता नहीं चला sir. Actually, we were being sitting 1.5 hours more, and all the sessions are very interesting and also interacting, sir. And thank you very much, ma'am, for providing such an opportunity to attend such sessions. Thank you very much for the organizations. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable remarks. Good afternoon, madam. Yes, sir. Yeah, here is Dongre from Birla College, Kalyan. Yes, sir. Yeah. So I would like to give my feedback that it is very useful. All the sessions were very useful. And today I learned first time how to create the website for ourselves.
So that's very nice. Thank you to organizers and today's sirs. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your valuable appreciation and remark. Anyone else? Hello, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are very much audible. Good morning to everyone. I am Dr. Payal Jandre from SVKM NMIMS School of Pharmacy and Technology Management. We have also run a lot of such webinars and workshop on ICT tools, and I was also associated with IIT Bombay. But I should say that all those things that I learned in this FTP for the last few days was very, very informative and useful. Looking forward to be a part of sessions more. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable appreciation and remarks. हेलो Okay. मैम, Yes. मैं मिताली बोल रही हूँ असम से, ma'am. जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, ma'am. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का कॉलेज को, कमला नेहरू महाविद्यालय को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो FDP की हमको ट्रेनिंग दिया है तो बहुत अच्छा था. खासकर अजय कुशवाहा होगा शायद, तो सर कुशवाहा. बहुत अच्छा था. और एक कौन था, प्राजक्ता धोटे मैडम. बहुत अच्छा था. मुझे FDP का बहुत अच्छा लगा, और खास करके इतना ICT के इतना अच्छा वो टेक्निक सिखाया कि नेक्स्ट टाइम में यदि मैं कोई क्लास वगैरह करूँ तो बहुत अच्छा होगा शायद. तो आप लोग ऐसे करते जाओ और हम लोगों को भी सिखाओ. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये कोशिश. तो आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable appreciation and remarks. Hello, ma'am. Yes, sir. Madam, myself, Dr. Dhruv Prajapati. Yes. I am from Gujarat, from Ganpati University. So let me first thanks to all of the entire team for arranging such a workshop regarding ICT. So it is one of the all the sessions are more informative. Though we are in the field of academic, though we are unaware of the tools which are applicable in the academic area. So from me and my university, we are thank you for all of you, the entire university and your committee, for arranging such a wonderful workshop. Hope so this type of workshop will be arranged in future. So we are we will the part of the the workshop. So thank you, ma'am, and thank you for arranging such type of workshop. Thank you. Sure, sir. Sure. Thank you, sir, for your appreciation. Hello. Yes. Hello. Yes. Good afternoon, ma'am. I am Mrs. Sheetalana Ture from Kamla Nehru College of Pharmacy, Butiburi. Yes. Actually, ma'am, we always, everyone want to attend the FDP function, but because of time limit and because of unavailability of our holiday, we unable to attend. But because of this online session, really thankful to all of you to this organized session. This is really very helpful to us. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable words. Anyone else? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. This is Dr. Rachna Sharma Malviya from Parul University, Gujarat. I am really thankful to Dr. Gurnule sir and the organizers for organizing such a wonderful day. We came to know very much new things each and every day. It was really fruitful and very much informative. Thank you so much. And I would like to tell you that in future, if you arrange such kind of FDP, please maybe touch with us. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. W.B. Gurnule sir, convener of FDP, to give concluding remarks about this FDP. Over to you, Gurnule sir. Thank you, KK madam. Am I audible? Yes, sir. Thank you, Dr. S.B. Kishore sir. Sir has given today
very nice information about the empowering teaching tutorial and regionals on the website and practical approach. Sir has explained well regarding the how to upload and create the and use of YouTube videos and other materials on the Google Drive, and also explain e-classroom, e-sources, what are the advantages of e-sources, how to upload e-videos, and flip classroom also. We have seen this is the new one, and Google, how to create Google Forms, link and photo gallery on the website. All the things have been explained, and I think all the participants have get benefited of all these things. And from first day to this last day, all the speakers have given something new, and on the new topics, and all the speakers have given new information and given lot of information to the participants. I think the participant get benefited of this new information given by different on the different topic. So once again, I thank you, Kishore sir, Yes, sir. for your nice presentation. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Detail regarding the teaching tutorial and the practical approaches, Thank you, sir. Thank you very much, sir. which is useful to the teacher as well as useful for the research scholar and particularly also student. So all of us, we need all these things, and therefore this information is very useful. And so for this, I thank you, Dr. Kishore sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Over to you, Ketki madam. Madam, I already shared my PPT in the chat box. So it's a Yes, kind sir, request yes, to sir. all the Yes, yes. students to download it. Over to Ketki madam. Sunita Yadav, madam, please mute yourself. Sunita Yadav, madam, please mute yourself. Sunita Yadav, madam, please mute yourself. Yes. Okay. Thank you so much, Gurnule sir, for giving concluding remarks regarding this FDP. Now, proceeding towards the end of the online national 1 week FDP on ICT tools for effective teaching learning, it's an honor to have been asked to propose a vote of thanks on behalf of Kamala Nehru Mahavidyalaya. I am gratefully indebted to patrons of this national FDP, Honorable Dr. Srimati Suhasini Vandari Madam, President of Amar Seva Mandal, Honorable Advocate Abhijit Ji Vandari Sir, MLC and Secretary Amar Seva Mandal, Honorable Dr. Smita Vandari Madam, Treasurer of Amar Seva Mandal, for their valuable guidance and moral support for conducting the FDP. I am earnestly thankful to respected resource person of today's session, Dr. S.B. Kishore Sir, for sharing his valuable knowledge with all of us. Thank you very much, sir. Thank you. I also mention my deep sense of regards to the galaxy of eminent speakers which we got for this online national level FDP. Respected Dr. Ajay Kushwaha sir, respected Dr. Prajakta Dhote madam, respected Ms. Swapnali Kadau madam, respected Dr. Mamta Baheti madam, and respected Dr. Aruna Samatkar madam for accepting our request and sharing their valuable knowledge in an interesting manner. I mention my sincere thanks to organizers of the FDP, respected Dr. Dilip Badwaik sir, Principal Kamala Nehru Mahavidyalaya, for providing enormous cooperation for this knowledgeable event. My sincere gratitude is also due to convener of the FDP, Dr. W.B. Gurnule sir, Head Department of Chemistry, Kamala Nehru Mahavidyalaya, for his strong efforts for this successful event. Participants are the indispensable part of any program. I mention my deep sense of appreciation for all the respected participants of the FDP. I am also thankful to all who have directly or indirectly supported for the success of the FDP. Thank you one and all once again. Now, with the permission of the chair, I declare that the 1 week faculty development program is over. Attendance and feedback link will be posted in the respective WhatsApp groups shortly. With this, I, Dr. Ketki Misar, signing off. Have a nice day. Thank you one and all. Hello, madam. Yes, sir. 1 minute. Yes. Kindly, all the participants are requested to Yes, switch on their videos or camera so that we can take the group photograph.